कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और हर सिचुएशन को दो नजरियों से देखा जा सकता है। ऐसे ही अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। एज पर डबल एंट्री सिस्टम, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स यानी कि दो पहलू होते हैं। Let us take an example. Say Mr. Prem starts the business of selling medicines with cash of rupees 5 lakhs. यहाँ पे मिस्टर प्रेम जो बिजनेस के ओनर हैं, वो मेडिसिन सेल करने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपना 5 लाख रुपया बिजनेस में डाल रहे हैं। जो पैसा ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakhs इन फॉर्म ऑफ कैश इंट्रोड्यूस की जा रही है बिजनेस में। तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, कैपिटल और कैश। इन दो एस्पेक्ट्स को हम दो अकाउंट्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ऐसा हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के केस में करते हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई किए गए दो एस्पेक्ट्स को नाम दिया जाता है डेबिट और क्रेडिट का। In other words, the account so identified will either be debited or credited. So in the nutshell, as per double entry system, every business transaction has two aspects, a debit and a credit. Not just that, this concept also says that every debit will have an equal and corresponding credit. Business transaction में कौन सा account debit होगा और कौन सा credit, ये डिपेंड करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर, और ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी डिफरेंट अकाउंट्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ईदर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट हाउ आर अकाउंट्स क्लासिफाइड ट्रेडिशनली. The traditional method classifies accounts into two broad types. An account is either personal in nature or impersonal in nature. Impersonal accounts are further subclassified as either real accounts or nominal accounts. Thus, in fact, we have three types of accounts here: personal, real, and nominal. Personal accounts relate to persons. तो अगर हम बात करें capital account which relates to contribution by owner, this account is in the nature of personal account as it relates to owner who would be some person. ऐसे ही अगर बिजनेस ने किसी सप्लायर से मटेरियल क्रेडिट पर खरीदा है तो सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट विल बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। और अगर बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पर बेची है तो कस्टमर अकाउंट और डेटर अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट ही होगा। पर्सनल अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक जिससे बिजनेस ने लोन लिया है उसको भी रिलेट कर रहा हो सकता है। ऐसे केस में बैंक एक नेचुरल पर्सन नहीं है, पर इन द आईज ऑफ लॉ बैंक हैज अ सेपरेट एंटिटी। तो बैंक को हम एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं और ये भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। अब आते हैं रियल अकाउंट्स पर। रियल अकाउंट्स रिलेट टू एसेट्स। अगर मैं बात करूं प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स जैसे अकाउंट्स, तो ये सारे अकाउंट्स रियल इन नेचर है। और अगर एक अकाउंट ना तो पर्सनल इन नेचर है और ना ही रियल इन नेचर है तो वो अकाउंट डेफिनेटली नॉमिनल इन नेचर ही होगा। सो नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो हमने समझ ली है। नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हेन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड ट्रेडिशनली. Looking at personal accounts which relate to persons, the person would either stand in the capacity of a receiver or a giver. So the rules of debit and credit for personal accounts are debit the receiver, credit the giver.
जब हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स की, which relate to assets, assets would either flow in the business or flow out of the business. So the rules of debit and credit for real accounts are debit what comes in, credit what goes out. And talking about nominal accounts, which relate to expenses, losses, incomes and gains, the rules of debit and credit are debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो ये तो बात हो गई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, अगर अकाउंट्स ट्रेडिशनली क्लासिफाई किए गए। अकाउंट्स को मॉडर्न तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। As per modern way of classifying accounts, accounts would either be an asset account or a liability account or a capital account or a revenue account or an expense account. अगर हम अकाउंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई करें तो अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड एक्सपेंसेस always have a debit balance. And if we talk about liabilities, capital and revenues, these accounts always have a credit balance. So going by this, the rules of debit and credit will be as follows. Since assets and expenses have to have a debit balance, an increase in such accounts will be debited and a decrease credited. For liabilities, capital or revenue accounts, an increase will be credited since these accounts have a credit balance, and if there is any decrease in such accounts, it will be debited. एक और बात, अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे ट्रेडिशनली क्लासिफाई किया जाए अकाउंट्स को या मॉडर्न तरीके से, नेट रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। If one looks closely, assets, liability and capital accounts actually would relate to persons and hence can be viewed as personal in nature. Asset accounts may also however be real in nature. And as far as revenues and expenses related accounts go, these would be nominal in nature. So you see, traditionally or modern way of classification, whichever way you may use, they are actually no different from each other. It is only that the approach is a little different. अगर हम शुरू में लिए गए एग्जाम्पल को देखें, where Mr. Prem starts the business by introducing capital of ₹5 lakh in form of cash, तो हमने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से चलूं, तो कैपिटल अकाउंट will be a personal account and the owner is standing in the capacity of a giver. Hence, going by the rules for personal accounts, we credit the giver and in this case, we will thus credit the capital account. If I go by the modern classification, capital account has to have a credit balance and because in this case, capital is being introduced, it is an increase and hence capital account will be credited. So you see, चाहे मैं traditional approach use करूं या modern, इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा है। नाउ कमिंग टू कैश अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज फ्लोइंग इन द बिजनेस एंड हेंस विल बी डेबिटेड एज पर द रूल व्हिच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट की जाए तो कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट एंड एन एसेट अकाउंट which has to have a debit balance will be debited in case of an increase. In this case, since cash is coming in leading to an increase, cash account will be debited. So चाहे traditional approach हो या modern, you will see every time you will get the same answer. So friends, आज के सेशन में हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा। Double entry system or dual aspect concept, which talks about two aspects of a transaction, one debit and another credit. Also, we looked at the process of determining the debit and credit aspects in a transaction. The process, which would start with identifying the accounts in a transaction, followed by determining the nature of accounts using traditional or modern classification, followed by applying the rules of debit and credit, and finally being able to determine the debit and credit aspects in that transaction. So friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. I will love to have your feedback in the comment section.
And yes, of course, to view more videos and get regular updates, do subscribe to my YouTube channel. Goodbye for now. See you soon again.